I already know that this video is gonna trigger a lot of people. So if you are someone जिसको बाकी लोग का opinion सुन के मिर्ची लगता है, then skip this video. It's not for you because today I'm gonna talk about how this weird, fake, selective feminism जो डेंगू की तरह फैल रहा है हर जगह, online, offline, everywhere around us is so ghatak to the society. Today I'm going to talk about why some girls use feminism only when it benefits them, why some men are called toxic when they're just sharing their preferences, why some housewives as well as working women are called like shameless, but you know, gold diggers are not called shameless, and how movies and influencers are promoting and saying stuff because of which young girls, in fact all the young kids, feel that oh my god, this is exactly what feminism is, jabki that is not feminism, that is bullshit. And I mean, फेमिनिज्म कहाँ था भाई एंड कहाँ पहुंच गया है. लेट्स टॉक अबाउट सेलेक्टिव फेमिनिज्म फर्स्ट. इसमें क्या होता है, अ गर्ल विल बिलीव इन फेमिनिज्म एंड इक्वालिटी ओनली व्हेन इट इज बेनिफिटिंग हर. द मिनट इट स्टॉप्स बेनिफिटिंग हर, शी विल बेल. शी विल एक्सपेक्ट हर मैन टू पे फॉर एवरीथिंग, okay, like every damn thing, and if he doesn't, she will preach things like break up with him. I saw this one reel of this influencer on Instagram, I think, not just one reel, many videos actually, where they talk about, you know, girl, if he does not pay your bills, if he does not pay for your nail, your eyelashes, your hair care, your skin care, your clothes, your bill, your jewelry, dump him, baby girl, queen, you deserve better. And you know what is sad, that millions of people follow such influencers, and वो रील्स के नीचे कमेंट्स पता है क्या होता है, गर्ल्स आर लेजिट फ्लेक्सिंग, यंग गर्ल्स, ओके, उनका जब जब मैंने प्रोफाइल क्लिक करके देखा, दे आर ऑल दीज यंग गर्ल्स, प्रोबब्ली टीनेज गर्ल्स, 13 15 16 इयर्स, दैट फ्लेक्सिंग कि ओ माय बॉयफ्रेंड, ही जस्ट गॉट मी फ्लावर्स, आई वांटेड हिम टू गेट मी दिस एंड बिकॉज ही डिडंट, आई डंप्ड हिम. भाई क्या कर रहे हो यार? आई मीन, सिंस व्हेन डिड मटेरियलिस्टिक थिंग्स go above a person's characteristic? I mean, if that guy is good, उसका नेचर अच्छा है, वो तुम्हारी केयर करता है, तुमसे प्यार करता है, he's treating you well, and he's just struggling in his career, initial stages of his career, and you're just dumping him because he's not paying for all your luxury treatments or whatever. I mean, I understand if a man is earning 10 times more than you, देन आई अंडरस्टैंड कि आप इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप कंपेरिजन में कम कमा रहे हो. बट इफ ही इज पेइंग फॉर थिंग्स एंड अगर आप अर्न कर रहे हो, डिसेंट अर्न कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, तो कभी कभी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करने में क्या जाता है? वाई इज this things why are you looking at this thing like it's something bad, you know, that oh my god, he's not paying for anything, तो मुझे इसको dump करना पड़ेगा? How is that feminism? Because feminism means equal respect, equal choices, equal contribution. This is selective privilege, selective entitlement, man. I mean, तुम feminism को अपने convenience के हिसाब से use नहीं कर सकते. This is nonsense. Now let's talk about the second point जो थोड़ा बहुत controversial है, because this discussion has been going on in social media, I think, for like months or years now. क्या होता है कि women, some women, they call men toxic for having a preference. Okay, scene क्या होता है? Women will be like, oh, I want a guy who's 6 feet. Okay, he should have a 6-figure salary, right? And he should drive this big expensive car like a Lamborghini or something like that. He should have this big bungalow in a city like Mumbai or something like that. ठीक है, अब ये उनका preference है. Preference होना गलत नहीं. Problem क्या होता है? अब जब वही same अगर आदमी बोले, अगर आदमी बोलेगा कि oh, I want a girl or I prefer a girl who did not have a lot of casual hookups or relationships, or you know, I want a girl who doesn't smoke because I don't smoke, so I don't want a girl who smokes, or I don't prefer girls who drink because I don't drink. Suddenly these women, they will call out such men and they'll be like, oh my god, ew, so toxic, so misogynist. क्यों भाई? तुम preferences रख सकते हो तो वो नहीं रख सकता क्या? वो भी इंसान है, उसकी भी expectations होती है. Problem क्या होता है both for men and women, that some of these preferences are very shallow. Okay, it is I mean, it is not very realistic. Okay, like for example, when men say we want a girl who can cook, like, you know, different cuisines, like, you know, continental dishes, or we want a girl who does not have a single stretch mark in her body, who is a virgin, like, you know, who does not have any guy friends. And when women have preferences like, oh, we want a guy who's earning like 30-40 lakh. मैंने एक reel देखा, college going girls, okay, probably in they're 19, 20 or 21. Oh, we want a guy who's like earning 30-40 L. We are expensive girls. I'm like, behen, please focus on your studies first. Focus on your career. Focus on becoming a high valued woman first. Be financially independent, and बाद में, I mean, expectations होना गलत नहीं है यार, but तुम इतना unrealistic
अनरियलिस्टिक, कभी कभी मैं थोड़ा बोबड़ा जाती हूँ, बट इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि तुम्हें क्या रियल है क्या फेक है उसमें डिफरेंस ही नहीं समझेगा. आई मीन, एज आई सेड, हैविंग एक्सपेक्टेशंस आर नॉट रॉन्ग, बट इट शुड बी रियलिस्टिक. I mean, I don't know, it's really sad because यहाँ पे तुम मटीरियलिस्टिक चीजें चूज कर रहे हो ओवर अ पर्सन्स कैरेक्टर. मतलब अगर एक इंसान सच में एक अच्छा इंसान है तुम वो नहीं देखोगे, बट तुम देखोगे कि बाकी सारी मटीरियलिस्टिक चीजें या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में ये पर्सन फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर GPL, लेट मी लाइक, देन दे ऑल विल क्राई सेइंग दैट ओ आई कांट फाइंड अ पार्टनर, क्योंकि इतनी फालतू एक्सपेक्टेशंस रखते हो यार. There was also this one or two reel that I saw where this woman, I think she's a coach or something like that, and she was like, I will teach you how to bag a rich and wealthy guy. I will give you all the tips. Comment link if you want the document. And these girls are commenting link link link, and जितना भी मेरे को दिख रहा था ना comment link link link, मैं सबका प्रोफाइल जाके देख रही थी. बच्चे, टीनेजर्स है भाई. I mean, they're not understanding what is happening. Like, just teach girls how to be financially independent, how to be a high valued woman. You're teaching girls how to like bag a rich wealthy guy. ठीक है भाई, if your expectation is a rich wealthy guy, fine. You first focus on yourself ना. You become a good woman first. ये सब, oh my god, मैं वो सब जब देखती हूँ, I feel like fuck, where are people heading right now? Now there are also some fake feminists or pseudo feminists who will call out housewives or women who are working. Okay, like I've seen these podcasts, and even in real life I've seen people talking about this. Okay, like, oh, she's a housewife, oh, she's dependent on her man, that is so bad. See, I will tell you one thing about housewife, okay, because I've seen a lot of housewife in my family. Like, my mom is a working woman, but my aunties, they are homemakers, and being a homemaker is a very difficult job. Okay, पूरा घर का ध्यान रखना, cooking, cleaning, सब कुछ करना. I think people don't value homemakers enough. Okay, but I also feel financially independent होना बहुत important है. एक टाइम था जब वुमेन को वो चॉइस नहीं था पढ़ाई लिखाई करने का, जॉब करने का, सो दे वर फोर्स्ड टू बी होम मेकर्स. बट अभी वो चॉइस है. सो इवन इफ यू चूज टू बी अ होम मेकर, वो आपका और आपका हस्बैंड का बीच का अरेंजमेंट है. इफ हस्बैंड सेज कि हाँ यार, आई एम अर्निंग इनफ, आई कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आई डू नॉट नीड अनदर पर्सन अर्निंग, एंड इफ द वाइफ सेज कि ओके ग्रेट, बिकॉज इवन आई वांट टू बी अ होम मेकर, ठीक है यार, दोनों का म्यूचुअल चॉइस है. बट आई वुड स्टिल अर्ज ऑल वुमेन हु प्रेफर टू बी होम मेकर्स दैट एटलीस्ट एक छोटा सा सोर्स ऑफ इनकम रखो रोलिंग, ताकि हाथ में कुछ तो तुम्हारा खुद का पैसा आते रहे. बिकॉज मैंने इतनी सारी स्टोरीज पढ़ी है एंड इवन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देखा है जहाँ पे women are like, oh, my husband cheated on me, oh, my husband is abusive, but I can't divorce him because I'm financially dependent on him. मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे जॉब करना नहीं आता, मुझे बाहर का दुनिया नहीं पता, मुझे कॉर्पोरेट जॉब कैसे क्या करूं मुझे नहीं पता. इट्स बीन सो मेनी इयर्स कि मैं हाउस वाइफ हूं कि अब मुझे नहीं पता कि मैं कमाऊं कैसे. सो दैट्स आई वुड से हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज दैट विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट फीलिंग दैट ओ माय गॉड, मेरी खुद की कमाई है यार, लाइक आई कैन, लाइक आई हैव सम सोर्स ऑफ इनकम, बट having said that, again, being a homemaker is a very difficult job. So when I see all these people, like there was this one video, okay, where this girl, she was like, she spoke about how she quit her job recently and now she's a homemaker and she enjoys cooking dishes for her husband. He comes late, so she enjoys cooking dishes for him, cleaning and everything. And जब weekend होता है, जब husband को time मिलता है, वो भी equally उनके बीच में responsibility divide होता है, ठीक है. And उसमें there are girls commenting, oh my god, girl, I could never cook for a man, oh my god, girl, I could never be a housewife, that is so degrading. तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले? That is their choice and preference. I'm telling this again and again. जब तक किसी का preference morally wrong ना हो, there is no harm, okay? अगर वो preference से तुम्हारा कुछ घाटा नहीं हो रहा, it's not hurting people, it's not something which is unethical, it's fine. तो why are you commenting and saying such things that, oh girl, this is so bad, oh I could never, I would rather be single than cook for a man. क्या प्रॉब्लम है यार कुक करने में? अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली डिवाइड हो रही है, वर्किंग डेज में हस्बैंड बाहर जाके कमा रहा है, लड़की घर का ध्यान दे रही है, छुट्टियों में दोनों इक्वली काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? दैट इज देयर प्रेफरेंस. बट अगेन, एज आई सेड, हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर दूसरा जो मैंने देखा है ना, ये बहुत ज्यादा हेट्रेड टुवर्ड्स वर्किंग वुमेन और वुमेन हु हैव दिस डिफरेंट चॉइस ऑफ वर्क. Like for example, if a woman, she's working, she's having a high paid job and she's enjoying that, she doesn't prefer household chores. उसको जॉब करना, माइक चालू है ना, हाँ, उसको जॉब करना पसंद है, पिलाटेस करना पसंद है, जिम करना पसंद है. दे विल बी लाइक, शिट, ये तो पूरा टाइम काम करती रहती है, ये तो अकेले ही मरने वाली है, इसको तो पति मिलने से रहा. एंड देन दे विल ट्राई टू डिम हर डाउन बाय सेइंग दैट घर का भी काम काज सीख ले. सी, कुक
कुकिंग सीखना इज अ लाइफ स्किल, एवरीबडी शुड लर्न कुकिंग, आई अग्री, बिकॉज मैं भी टेरेबल कुक हूँ, बट मुझे थोड़ा बहुत मैं सीख रही हूँ, बिकॉज आई एम लाइक नहीं यार, कल जब अकेले रहूंगी मुझे आना चाहिए, आई शुड नॉट बी ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स, ओके। बट तुम यहाँ पे लेजिट उसको बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, तू थोड़ा ना घर का काम सीख ले, ये जॉब तू पूरा लाइफ लॉन्ग नहीं करती रहेगी, कल तेरे को बच्चे पैदा करने हैं, घर का देखना है, जॉब वॉब को जाने दे, अब तू ये सब कर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। So shaming a woman for being a housewife or shaming a woman for being a working woman is also not right, I feel, because everybody has the right to have their own preference. जब तक वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, there is नो प्रॉब्लम। और मुझे एक और चीज क्या बुरा लगता है बताए क्या, दैट व्हेन दे कमेंट ऐसे हाउसवाइफ के वीडियोस पे, ओ माय गॉड यू आर कुकिंग, आई कुड नेवर, ओ माय गॉड तू घर का सब चाकरदारी कर रही है, आई कुड नेवर, दीज आर द सेम गर्ल्स हु विल प्रीच एंड से थिंग्स लाइक डेट अ मैन हु गेट्स योर नेल्स डन, हु गेट्स यू ज्वेलरीज, योर मेकअप, हाउ इज दैट नॉट अ डबल स्टैंडर्ड, टेल मी दैट, हिपोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या है ये। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हाईलाइट हाउ मूवीज एंड डिजिटल स्पेस इज actually messing us up, okay, because guys, the brainwashing is actually very real, okay. When I see movies that is supposed to be about feminism and women empowerment, and they glorify cheating, casual sex, hookups, and you know, being rude to someone, cold to someone as feminism, and मुझे डर क्या लगता है पता है, that all these school girls and college girls जो ये सब series and movies देख रहे हैं, they grow up thinking that, oh, being cold and rude means being a feminist, you know, sleeping around and cheating means feminism, or you know, what to say, और क्या है, or like having multiple casual relationships and hookups is also feminism, and this is a fact, I'll tell you why, okay. मेरी एक friend है, उसकी छोटी बहन है, okay, she's in college now, 12th में हो, what happened I will tell you, there's this series, Shobita is there in that series, Made in Heaven, okay, I have not watched that series, but मैंने वो एक clip देखा था, and मैं और मेरी friend वही discuss कर रहे थे। अब वो clip में क्या होता है, that Shobita, she has a boyfriend, okay, and she sleeps with her ex husband, तो अपने वो बॉयफ्रेंड पे चीट करती है विद एक्स हस्बैंड, फिर जब बॉयफ्रेंड को या समथिंग, मतलब मुझे वो क्लिप से वही समझा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और जब वो बॉयफ्रेंड को मालूम पड़ता है, ही कॉल्स हर आउट टेलिंग हाउ डेयर यू, लाइक यू नो, हाउ कैन यू चीट ऑन मी, व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन यू आर, और उसको देख के बोलती है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, डू नॉट मेक द डिसीजंस फॉर मी। एंड अभी भी मुझे याद है, जब मैं मेरी फ्रेंड से वो बात कर रही थी, शी टोल्ड मी दैट हर यंगर सिस्टर, शी वाज वाचिंग दैट एंड शी वाज लाइक, oh, she was looking up to that character, saying that this is so cool that this character, she's fussing men to get his property, she's sleeping with her ex-husband and you know, calling her boyfriend out and telling कि oh, तुम मेरे लिए decisions ले नहीं सकते हो, and I'm like, oh my god, she's just in 12th and she's growing up thinking that whatever that character did, शोभिता का character ने जो भी किया, you know, किसी को फंसा के उसका प्रॉपर्टी लेना या फिर अपने बॉयफ्रेंड पे चीट करना विद अ hex नहीं, ex-husband, it is cool, and she is glorifying that character, and that's when I was like, oh my god, like, is this what we are heading towards? Because now all these young girls are thinking after watching these movies and web series कि cheating का मतलब होता है growth, healing का मतलब होता है sleeping around because that will heal your inner chakra, and ghosting someone or being rude to someone means powerful, like reclaiming your power. Feminism एक time में क्या था भाई? Equal opportunities, equal respect, feeling safe in public, equal rights. Now it has all become about who can be rude to people, like मैं कितने लोगों के साथ रूड रह सकती हूँ, मैं कितने लोगों को कॉल आउट कर सकती हूँ, या फिर इट हैज ऑल बिकम अबाउट हाउ कैन आई हैव मल्टीपल कैजुअल रिलेशनशिप्स एंड फ्लेक्स अबाउट इट एंड बी अनबॉदर्ड, लाइक अनबॉदर्ड क्वीन। इज दैट व्हाट फेमिनिज्म इज अबाउट? नो, राइट? एंड द थिंग इज, मेरे को डर क्यों लगता है, तुम लोग बोलो कि नहीं सोनाली, मूवी अलग होता है, रियल लाइफ अलग होता है, यू हैव टू हैव दैट माइंड टू नॉट गेट इन्फ्लुएंस। नो गया, it's not like that, because when I was a kid, my character or whatever I was seeing, it was influenced by people around me or what movies I was watching, whoever I was meeting. मेरा जो भी character development हुआ, it was based on all these observations. Why do you think people say movies like Animal or any misogynistic movie is not good to the society? क्योंकि men वो सब देखते हैं, they see a movie where a man is casually pinching a woman's waist or stomach, or you know, pulling her bra strap or doing something like that, and men think, oh, this is so normal, this is how I should confront a woman or you know, talk to a woman, and they do that in real life. So movies play a big role, and
I mean, it's just sad that people are growing up and they're seeing all these empowering feminist women, and growing up to be like that. It took me time. It took me time to unlearn a lot of things, to not believe everything these pseudo feminists are preaching, you know. And when I finally understood feminism, I realized that yeah, this is what feminism is, you know. It's not a performance that people are doing right now, or it is not a brand that people are labeling it as. Feminism is always going to be a process for me. And if you ask me, Sonali, then what is real feminism? I would say, guys, real feminism is letting a woman decide if she wants to be a CEO or a homemaker and respect her choice, letting a man have his preferences or his set boundaries and not calling him misogynist or toxic, and understanding that equality means equality in every circumstance, and in every way equality is equality, even if it might be inconvenience for you. I mean, feminism is not going to be pretty always, it's not going to be aesthetic always, you know. It's going to be very raw and very honest, you know. It will have a lot of uncomfortable questions and conversations like we are doing right now. I mean, when I thought of starting the video, I was like, oh my god, this is going to be so uncomfortable to talk about. People are going to judge me, people might misunderstand me, but I'm like, you know what, this is exactly why we need to talk about it. So my darlings, ask yourself this question, that am I really a feminist, or am I using feminism just as a filter? Okay, and let me know in the comments, what is that one double standard hypocrite thing that you believed in and you followed for years, and you finally realized, yaar, ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, you know. So let me know in the comments, and if you like this video, you know what to do: like, comment, and share it with someone who needs to hear this today. And be real, be loud, and be free. Mwah. Love you, and I will see you in the next video.